UPSC के इंटरव्यू में if you want to get big score, you have to go beyond the obvious. That's quite often is called as system thinking या second order thinking. First order thinking is simple, where you have got an issue and you have an answer for that. Shall we stop it? Yes, we should stop it, and that's it. The first order average marks ला सकते हैं, सच हुआ तो सही हुआ तो. But then if you want to go for the second order thinking, you have to go beyond the obvious, and that's what they're looking forward to. आपके analysis की depth बढ़ जाती है. A simple example of this can be what can be the measures that can be taken about this particular issue. Sir, short term में ये कर सकते हैं, long term में ये कर सकते हैं, temporal depth दे देते हैं. But then I suppose there can be many facets to look into that. One approach is that should we ban tourism in ecologically fragile areas? First order, yes sir, we should ban tourism in ecologically fragile area. But then the second order would be when you are just going beyond this, and then they would say that yes, we should ban in ecologically fragile area, but also we should ensure कि बहुत सारे लोग जो उस पर डिपेंडेंट थे वो कहीं ऐसे ही नहीं वे दूसरी एक्टिविटी करने लगे, माइनिंग करने लगे या फिर फॉरेस्ट कटिंग करने लगे. उसके लिए भी प्लानिंग होनी चाहिए, एंड वी मस्ट लुक इनटू दैट एस्पेक्ट आल्सो. दैट इज व्हाट इज सिस्टम थिंकिंग इज ऑल अबाउट. दैट्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू लुक एट द रिपल इफेक्ट्स आल्सो एट द सेम टाइम. इनफैक्ट चेस्टरटन फेंस एक कंसेप्ट है. चेस्टरटन CHESTERTON फेंस. आप पढ़ना इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है ये चेस्टरटन फेंस थॉट. इसमें यू गो इनटू द रूट ऑफ द इशू. आई मीन आई वुड लाइक यू टू रिमूव दिस फेंस बिकॉज इट इज हैविंग नो यूटिलिटी नाउ, प्रोवाइडेड यू लेट मी नो एज टू व्हाई इट वाज इन द फर्स्ट प्लेस डन. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आजकल ये चेस्टरटन फेंस टेक्निक का यूज करते हैं. दैट्स इज सिस्टम थिंकिंग गोइंग बियॉन्ड द ऑब्वियस. क्या वजह थी जिसकी वजह से ये फेंस लगाया गया था? सो आई सपोज इफ यू गेट इनटू द आंसर एंड देन से दैट वी आल्सो मस्ट एग्जामिन एज द रूट कॉज व्हाई द इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी हैपेंड. वी शुड स्टॉप इट, देन आल्सो टेक द रिपल इफेक्ट एंड आल्सो ट्राई एंड सी एज टू व्हाई दिस इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी हैपेंड, एंड देन दैट आंसर बिकम्स वेरी रिस्पेक्टफुल. आई सपोज बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टेक्निक्स हैं. आई सपोज you got to be learning and practicing and using them if you want a big marks, big score, which is definitely doable, provided you know the techniques through which you are going to really impress them. My best wishes.